Assalamu alaikum dear students. In the previous class we have actually discussed about direction ratios and direction cosines of a line, or direction ratios or direction cosines of a vector, and we have discussed the observations regarding that. We have discussed some important remarks that regarding the concept. So now I think we have the building material for exercise first of three-dimensional geometry, and here lies the exercise 11.1, the first exercise of this three-dimensional geometry. And here lies the question number first of this exercise. This question number first is all about, we have three angles. We have a line, given line, and that line is making angles 90, 135 and 45 with the positive directions of x-axis, y-axis and z-axis respectively. We need to find the direction cosines of that line. So if a line is making angles, yes, 90, 135 and 45 with the positive directions of x-axis, y-axis and z-axis respectively, that is, we have the direction angles. And from the direction angles, on applying cosine to that, we will get the direction cosines of this line. So given a line, given a line makes angles, given a line makes angles 90 degree, 135 degree and 45 degree with the positive directions of x-axis, positive directions of x-axis, y-axis and z-axis respectively. So we have a given line, and that given line is making angles, yes, 90 degree, 135 degree and 45 degree with the positive directions of x-axis, y-axis and z-axis respectively. So means we are given the direction angles which a line makes with the coordinate axes. And if we have the direction angles, from that direction angles we can locate the direction cosines. Therefore, तो यहाँ पे अल्फा के बदले 90 है, बीटा के बदले 135 है और गामा के बदले जो 45 डिग्रीज है. So we will apply cosine to this alpha, beta and gamma to 90, 135 and 45. There we will get the direction cosines. So therefore direction cosines of the line are, तो इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइनस क्या होंगे? यस, आइदर या इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइनस होंगे ऑर्डर्ड थ्री टपल ऑफ cos 90, फर्स्ट एंगल इज 90, सो cos 90, cos 135 एंड cos 45 डिग्रीज, और या इन्हीं के नेगेटिव, दैट इज ऑर्डर्ड थ्री टपल ऑफ माइनस cos 90, minus cos 135 and minus cos 45 degrees. Because these are the direction angles 90, 135 and 45, so the line should have its direction cosinus in two forms. One is cos 90, cos 135 and cos 45, or इन्हीं के negatives, that is minus cos 90, minus cos 135 and minus cos 45, and that is either ये डायरेक्शन कोसाइन बन सकते हैं. यस, cos 90 का वैल्यू हमें मालूम है, cos 45 का हमें मालूम है, लेकिन इन बिटवीन दैट वी हैव cos 135 जिसका वैल्यू हमें मालूम नहीं है, बिकॉज दिस 135 डिग्रीज इज नॉट द स्टैंडर्ड एंगल. नाउ वी विल पुट दिस 135 इनटू स्टैंडर्ड एंगल्स. तो कैसे कर देंगे? cos 90 को रहने देते हैं cos 90, cos 135 के बदले लिखेंगे cos of 90 plus 45, because cos of 90 plus 45 will result 135, cos 45, और the same thing यहां पे भी अप्लाई कर देंगे, that is minus cos 90, या होगा minus cos of 135 के बदले 90 plus 45, या होगा cos minus times cos 45, minus times cos
45 degrees. Yes. Now this can be further written as that's either, तो इसके डायरेक्शन रेशो या बन सकता है, सॉरी डायरेक्शन कोसाइन या बन सकते हैं ऑर्डर्ड थ्री टपल ऑफ, look here Jigra, we have the value of cos 90 and the value of cos 90 is obviously 0. Cosine is that sort of function which maps the 90-degree angle with a real number and that's 0. So comma cos 90 plus 45, cos 90 plus theta, cos 90 प्लस थीटा का वैल्यू क्या होगा, cos 90 प्लस थीटा होता है हमेशा माइनस साइन थीटा. Why? Because it is 90 plus theta. When angle is in terms of 90 plus minus, trigonometric ratio will change as per the rules that we have discussed in the classes of trigonometry. So cos 90 plus theta will become, cos will become sine. Now it is directly equal to sine theta, but at the same time we have to check the sign, whether this sine theta is plus or minus. That wholly and solely depends upon this angle and upon the quadrant in which that angle is lying. 90 plus theta, when theta is acute, 90 plus theta will obviously lie in the second quadrant, and in the second quadrant cos is there negative, because in the second quadrant only sine and cosec are positive, so cos would be there negative. So that's why minus sine theta. तो यहां पे लिखेंगे माइनस cos 45 which is minus cos 45 का वैल्यू क्या होगा, obviously 1 divided by square root of 2, कामा cos 45 का वैल्यू 1 divided by square root 2. और या इसके डायरेक्शन कोसाइन हो सकते हैं ऑर्डर्ड थ्री टपल ऑफ माइनस cos 90 which is minus 0, तो वो फिर से 0 ही बनेगा, माइनस टाइम्स cos ऑफ 90 प्लस 45, तो cos ऑफ 90 प्लस 45 का वैल्यू आया था माइनस 1 बाई स्क्वायर रूट 2, लेकिन बाहर माइनस है तो बनेगा प्लस 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2, यहां बनेगा माइनस cos 45 विच इज 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2. तो जिगर ये लाइन जो लाइन बनाती है एंगल 90 डिग्री 135 एंड 45 विद द पॉजिटिव डायरेक्शंस ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, तो इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन दो फॉर्म के हो सकते हैं, या हो सकता है 0 माइनस 1 बाई स्क्वायर रूट 2 1 बाई स्क्वायर रूट 2 ऑर्डर्ड थ्री टपल, या होगा ऑर्डर्ड थ्री टपल ऑफ 0 1 बाई स्क्वायर रूट 2 एंड माइनस 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट. सो ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज of this three-dimensional geometry. Now we are on question number second of the same exercise, and in that question number second we have to actually find the direction cosinus of that line or direction cosinus of that vector which is making equal angles with the coordinate axes. So if it is making equal angles with the positive direction of coordinate axes, then the direction angles here would be same, means generally we have direction angles alpha, beta and gamma, but in this case the direction angles must be alpha, alpha and alpha, as the given line is making same angle with all the three positive axes, x axis, y axis and z axis, right? So the direction cosine can be calculated by operating cosine on the direction angles. So the direction angle is alpha, alpha and alpha, means direction cosinus would be cos alpha and cos alpha. Let the given line, so हम let करेंगे कि ये सेम एंगल जो बना रहा है विद ऑल द कोऑर्डिनेट एक्सिस, और उस सेम एंगल को हम अल्फा से डिनोट करेंगे. सो लेट द गिवन लाइन मेक्स एन एंगल, let the given line makes an angle alpha with all the three coordinate axes, so means we have alpha, alpha and alpha, instead of alpha, beta and gamma we have alpha, alpha and alpha. So if we have alpha, alpha and alpha, means we have the direction cosinus on operating cosine to these direction angles. So therefore direction cosinus of the given line or the given vector, direction cosinus of the given line are, तो इसके direction cosine क्या बनेंगे, ordered three tuple of, yes, cos alpha, cos alpha, cos alpha. But we know that the sum of squares of direction cosinus of a line or a vector is always equal to 1. But we know that
पढ़ा है हमने, हम डायरेक्शन कोसाइनस को एल एम से, एल एम और एन से भी डिनोट करते हैं. सो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर. जब हमने डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइनस पढ़े थे वहां हमने डिस्कस किया था कि द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइनस, अगर तीनों डायरेक्शन कोसाइनस के स्क्वायर किए जाएं फिर उनको ऐड किया जाए तो रिजल्ट में मिलता है लास्ट में रिजल्ट जो मिलता है दैट्स इक्वल टू 1. सो दैट इज यहां पे cos अल्फा और cos अल्फा. सो cos अल्फा, लेकिन cos बीटा के बदले भी cos अल्फा है और cos गामा के बदले भी cos अल्फा है. तो स्क्वायरिंग कर दो, ऐड कर दो, दैट इज cos स्क्वायर अल्फा. बट वी नो दैट cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा मस्ट बी इक्वल टू 1. व्हाई? बिकॉज l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू 1. The sum of squares of direction cosinus of a vector is always equal to 1. So implies cos square alpha plus cos square alpha plus cos square alpha. So 3 times cos square alpha is equal to 1, which implies cos square alpha must be equal. 3 multiple है तो उस साइड में डिवाइड होगा, so 1 divided by 3, which further implies that yes, cos alpha must be equal to plus minus square बनेगा plus minus square root. तो square root of 1 is 1 divided by square root of 3 is 3. तो cos alpha का वैल्यू आ रहा है plus minus 1 divided by square root 3. और यही cos alpha इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइनस है. तो या इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन होंगे प्लस 1 by square root 3 प्लस 1 by square root 3 प्लस 1 by square root 3 ऑर्डर 3 टपल, या होगा ऑर्डर 3 टपल ऑफ माइनस 1 by square root 3 माइनस 1 by square root 3 माइनस 1 by square root 3. Therefore the direction cosinus of the line of the given line are either या इसके डायरेक्शन कोसाइन होंगे यस ऑर्डर 3 टपल ऑफ 1 by square root 3 1 by square root 3 1 by square root 3, और या इसके डायरेक्शन कोसाइन होंगे ऑर्डर 3 टपल ऑफ माइनस 1 by square root 3 माइनस 1 by square root 3 माइनस 1 by square root 3. So when a line is equally inclined with all the 3 coordinate axes, then we can say that it is direction cosinus are of the form 1 by square root 3 1 by square root 3 1 by square root 3 order 3 double, or of the form minus 1 by square root 3 minus 1 by square root 3 minus 1 by square root 3. So we have obtained the direction cosinus. So all about question number 2 of this exercise. Now we are on question number 3 of the same exercise, and in that question number 3 we have been asked that we have the given direction ratios of a line and we have to calculate the direction cosinus. And from the direction ratios of a line we can easily locate the direction cosinus. So it is given that the given line has its direction ratios as minus 12, 4, minus 12, minus 18, 12 and minus 4. Minus 18, 12 and minus 4 are the direction ratios of a given line. And we need to calculate the direction cosinus. Pretty simple. तो पहला direction cosine किसके बराबर होता है? पढ़ा है हमने. First direction ratio divided by non-negative square root of sum of squares of all the 3 direction ratios. तो similarly दूसरा direction cosine क्या होगा? Second direction ratio divided by non-negative square root of sum of squares of all the 3 डायरेक्शन रेशियोज. और इसी तरह थर्ड डायरेक्शन कोसाइन हम कैलकुलेट कर सकते हैं. तो डायरेक्शन रेशियो में से हम डायरेक्टली डायरेक्शन कोसाइन कैलकुलेट कर सकते हैं. दैट इज पहला डायरेक्शन कोसाइन होता है पहला डायरेक्शन रेशियो डिवाइडेड बाय नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ तीनों डायरेक्शन रेशियोज का स्क्वायर कर दो, फिर सम कर दो, फिर नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट ले लो. सो अगर आपके पास डायरेक्शन रेशियो है तो आप इजीली निकाल सकते हो डायरेक्शन कोसाइनस. गिवन या ऐसे लिखेंगे द डायरेक्शन रेशियोज या डायरेक्शन नंबर्स भी कहते हैं. द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन ऑफ अ गिवन लाइन आर ordered 3 tuple of minus 18, 12 and minus 4. These are the given direction ratios of a given line. So we need to calculate the direction cosinus. Therefore, direction cosinus of
therefore direction cosinus of this line are, therefore direction cosinus of this line are, तो इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे? यस, ऑर्डर्ड थ्री टपला, पहला डायरेक्शन कोसाइन, फर्स्ट डायरेक्शन रेशियो दैट्स -18 divided by non-negative square root of sum of squares of all the three direction ratios means -18 square, yes jigar, plus 12 square, yes, plus -4 square, right? तो सेकंड डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा? सेकंड डायरेक्शन रेशियो 12 डिवाइडेड बाय द सेम थिंग दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ -18 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर. और तीसरा डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा? थर्ड डायरेक्शन रेशियो -4 डिवाइडेड बाय नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ सेम थिंग -18 स्क्वायर, यस, प्लस 12 स्क्वायर एंड प्लस -4 स्क्वायर. Clear? Now that's equal to ordered three tuple of -18 divided by, calculate कर दो, तो this is actually square root of, yes, -18 square, minus square is plus 18 square is 324 plus 12 square is 144, yes, plus -4 square is that is plus 16. Clear? -18 स्क्वायर को आप चेक भी कर सकते हो, शायद 224 आ रहा है, सो 18 into 18 आप कर दो, 8 8 is 64, 8 1 is 8, 8 plus 6 that's 14, 1 8 is 8 and 1 1 is 1, so 224 आएगा यहाँ पे, not 324 but 224, so it is 224 actually, or 324, no sorry it is 324. So 324 plus 144 plus 16, and second would be again 12 divided by non-negative square root of again 324 plus 144 plus 16, and this is again -4 divided by non-negative square root of 324 plus 144 plus 16, and that's equal to ordered three tuple of, this is -18 divided by, हाँ जी, अगर इसको सम कर दो 324 प्लस 144 प्लस 16 तो कितना आ रहा है? 324 प्लस 144 प्लस 16, 6 4 10 plus 4 that's 14, 2 plus 1 that is 3, 3 plus 1 is 4, 4 plus 4 that's 8, and 3 plus 1 is 4, so 484, and 484 का स्क्वायर रूट जो होगा क्या होगा? ऑब्वियसली 22, राइट? चेक भी कर सकते हो, 484 का जो स्क्वायर रूट होगा दैट्स 22, सो दिस इज इक्वल टू 22, 12 डिवाइडेड बाय सेम थिंग दैट्स 22, and -4 divided by the same thing that is 22, so the direction cosinus would be then equal to ordered three tuple of, yes, 2 9 is 18, 11 is 22, तो क्या बनेगा जिगरा? -9 divided by 11, yes, 2 6s are 12, so 6 divided by 11, and 2 -2s are, so -2 divided by 11. So if the direction ratios of a line are -18, 12 and -4, then its direction cosinus must be -9 by 11, 6 by 11 and -2 by 11. All about question number 3. Now we are on question number 4 of this exercise, and in that question number 4 we have to prove that 3 points are collinear, and the given 3 points are, so in question number 4 we have 3 given points, and we need to prove that all the 3 points are collinear, means they are lying on a same straight line. So we have 3 given points, and suppose we denote them by point A. This point A has its coordinates as 2 3 4, 2 3 4. We have a point B, and that point B has its coordinates, given coordinates as -1 -2 1, -1 -2 1, and we have the third point C, and that third point C has this given coordinates as 5 8 7, 5 8 7, and we need to prove that
all the 3 points are lying on a same straight line, means they are collinear. So by using the concept of direction ratios or direction cosinus, how we can prove that 3 points are collinear? कैसे प्रूव करेंगे कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं? तो कैसे प्रूव करेंगे? फर्स्ट वी विल फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB एंड आफ्टर देन वी विल फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AC. फिर अगर हम ये प्रूव कर पाए कि AB और AC के डायरेक्शन रेशियोज सेम हैं या प्रोपोर्शनल हैं, अगर AB और AC के डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल हैं, तो दो लाइन्स के डायरेक्शन रेशियो जो प्रोपोर्शनल होंगे वो क्या होंगे? पैरेलल. क्योंकि पढ़ा है हमने पैरेलल वेक्टर्स हैव पैरेलल लाइन्स हैव और पैरेलल वेक्टर्स हैव प्रोपोर्शनल डायरेक्शन रेशियोज. तो ये आएंगे पैरेलल, ए बी और ए सी आएंगे पैरेलल. बट इट इज इम्पॉसिबल. व्हाई? बिकॉज दे हैव द सेम इनिशियल पॉइंट. सो जब ये पैरेलल हैं, इनिशियल पॉइंट सेम है, तो इसका मतलब ए बी और ए सी एक ही लाइन पे लाई करेंगे. जब ए बी लाइन और ए सी लाइन एक ही लाइन पे लाई करेंगे, एक गिवन लाइन पे लाई करेंगे, सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे, तो ऑब्वियसली पॉइंट्स ए बी और सी भी एक ही लाइन पे लाई करेंगे, तो मीन्स दे मस्ट बी कोलिनियर. तो सबसे पहले हम ए बी के डायरेक्शन रेशियो कैलकुलेट कर देंगे, फिर ए सी के डायरेक्शन रेशियो कैलकुलेट कर देंगे. अगर डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल आ रहे हैं तो लाइन्स मस्ट बी पैरेलल. But it is impossible for the lines AB and AC to be parallel because they have the same initial point A, same point A. So they must lie on same line, means points A, B, C are collinear. So here we are on question number 4. Let the three given points be. Let क्यों किया? क्योंकि नाम नहीं दे रखा था, so यहां पे हमने नाम दिया A, B and C. Let the three given points be. Let the three given points be A of 2, 3, 4, B of -1, -2, 1, and C of 5, 8, 7. Clear? First we will find the direction ratios of AB. Therefore, direction ratios of ABR. तो AB के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे? यस, ऑर्डर्ड थ्री टपला. पढ़ा हमने डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन और अ वेक्टर इन टर्म्स ऑफ एंड पॉइंट्स. अगर आपके पास कोई लाइन है जिसके एंड पॉइंट सपोज x1, y1, z1 है और दूसरा एंड पॉइंट जो है वो x2, y2, z2 है, तो यू कैन डायरेक्टली कैलकुलेट द डायरेक्शन रेशियोज. कैसे? x2 माइनस x1 होगा फर्स्ट डायरेक्शन रेशियो, y2 माइनस y1 होगा सेकेंड डायरेक्शन रेशियो, z2 माइनस z1 होगा थर्ड डायरेक्शन रेशियो. So in the similar fashion you can calculate the direction ratios of AB here. So -1, -2, -1, -2 would be the first direction ratio. -2, -3, -2, -3 would be the second direction ratio, and 1 - 4 would be the third direction ratio, and that's equal to ordered three tuple of -1 - 2 is -3, -2 - 3 is -5, and 1 - 4 is again -3. So here the direction ratios of line AB or vector AB are -3, ordered three tuple of -3, -5, -3. In the similar fashion, we are going to calculate the direction cosines of AC. Also, direction cosines of line AC or vector AC are, again apply the formula. इस समय AC का करना है, तो again apply the formula x2 minus x1, that's 5 - 2. Yes. y2 minus y1, that's 8 - 3. Yes. z2 minus z1, and that's 7 - 4. And that's equal to ordered three tuple of 5 - 2 is 3, 8 - 3 is 5, 7 - 4 is again 3. तो AB के डायरेक्शन रेशियो है -3, -5, -3. ये हैं AB के डायरेक्शन रेशियोज, और AC के डायरेक्शन रेशियोज हैं 3, 5, 3. So obviously they must be proportional. They must be in the same ratio, because -3 by 3 -1, -5 by 5 -1, -3 by 3 -1. So the direction ratios of AB and AC are in the same ratio, means they are proportional. And when the direction ratios of two lines are proportional, they must be parallel.
but it is impossible for AB and AC to be parallel as they have the same point A, same initial point A. Sinus, तो यहाँ पे मेंशन कर देंगे, sinus -3 divided by 3 must be equal to -5 divided by 5 must be equal to -3 divided by 3 and all must be equal to -1. That is, इसका क्या मतलब हुआ? That is direction ratios of AB and AC are proportional. That is direction ratios of AB and AC are proportional. तो AB और AC के डायरेक्शन रेशियो जो है वो प्रोपोर्शनल आ रहे हैं, तो इसका क्या मतलब? Therefore AB and AC must be या would be parallel. Therefore AB and AC must be parallel, but AB and AC have the same initial point. Yes, A. Therefore AB and AC must lie on a same straight line. So they must lie on a same straight line. When AB and AC are lying on a same straight line, therefore points AB and C are, therefore points A, B and C are collinear. तो ये 3 points A, B and C ये lie करेंगे एक same straight line पे, so they must be collinear. So all about question number 4 of this exercise. Now we are on question number 5 of this exercise, first of 3-dimensional geometry, and that's the last question of this exercise. And in that question we have a given triangle with the given vertices, and its vertices are A of 3, 5, -4, B of -1, -1, 2, and C of -5, -5 and -2. So we have a triangle with its 3 given vertices. With the coordinates of its 3 given vertices, we need to calculate the direction ratios and direction cosines of its 3 sides. We need to calculate the direction ratios and direction cosines of AB. We need to calculate the direction ratios and direction cosines of BC. We need to calculate the direction ratios and direction cosines of AC. So यहाँ पे मेंशन कर देंगे let, चूंकि नाम नहीं रखा था वहां पे ABC, इसलिए let कर रहे हैं. Let A of 3, 5, -4, B of -1, 1, 2 and C of -5, -5, -2 be the vertices of a triangle ABC. So these are the 3 vertices of a triangle, given vertices of a triangle ABC. Now you need to calculate the direction ratios as well as the direction cosines of the sides of this triangle, means AB, BC and AC. तो सबसे पहले हम AB के डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन कैलकुलेट करेंगे. तो therefore चूंकि AB जो साइड है इसका वन एंड पॉइंट A है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें मालूम है और दूसरा एंड पॉइंट B है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें मालूम है, तो वी कैन इजीली लोकेट द डायरेक्शन रेशियोज. कैसे? x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1. So therefore हम कैलकुलेट करेंगे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ABR. तो क्या होंगे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB? ऑर्डर्ड 3 टपल ऑफ x2 - x1 यानी -1 - 3, y2 - y1 1 - 5, z2 - z1 2 - -4, that is 2 + 4, and that's equal to ordered 3 tuple of -1 - 3 is -4, 1 - 5 is again -4, and 2 + 4 is 6. So the direction ratios of this AB side AB of this triangle ABC must be -4, -4 and -6. And from these direction ratios you can calculate the direction cosines. Also, direction cosines of
Also direction cosines of AB are, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या रहेंगे? ऑर्डर्ड थ्री टपल ऑफ, यस, पहला डायरेक्शन कोसाइन दैट इज फर्स्ट डायरेक्शन रेशियो -4 डिवाइडेड बाय नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल द थ्री डायरेक्शन रेशियोज, दैट इज -4 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, राइट? एंड सेकेंड डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा? अगेन -4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ सेम थिंग, -4 square plus -4 square plus 6 square. And finally we have 6 divided by non-negative square root of, yes, again the same thing, -4 square plus -4 square plus 6 square. And that's equal to ordered 3 tuple of -4 divided by, yes, square root of -4 square is 16 plus this is again 16 plus this is 36. तो यहां पे भी -4 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 16 plus 36. यहां पे 6 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 16 plus 36. Calculate the values. Calculate the value of the square root. क्या आएगा? And -4 by that thing will be the first direction cosine. -4 divided by that thing will be the second direction cosine, and 6 divided by that thing would be the third direction cosine. So in this way we have calculated both the direction ratios as well as the direction cosines of AB, and in the similar fashion you will calculate the direction cosines of BC as well as the direction ratios and direction cosines of AC. So that's homework for you. You can do that easily in the similar fashion. You have to go first, you have to find the direction ratios of BC and direction cosines of BC, and after then you have to find the direction ratios of AC and direction cosines of AC. So in this manner we have calculated our exercise, that's 11.1, the first exercise regarding three-dimensional geometry.